Students, open your book at page number 4. Clauses. I am going to read the definition. Listen to me carefully. A group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is called a clause. A clause has a finite verb. First, tell me what is predicate. Predicate is a part of a sentence or clause containing a verb and stating something about the subject. So that's called the predicate. But a group of words we have, and that group of words contain a subject and a verb, is called a clause. A clause has a finite verb. Remember this word? I explained you in phrase what is finite verb. Remember this word? I explained you in phrase what is finite verb. So, phrase has not finite verb, but clause has a finite verb. So it is totally opposite to phrase. In clause, we have a subject and we have a verb. If we have a subject and verb in our sentence, so definitely it conveys a complete idea. If someone asks you define clause, so you can say it is a group of words that includes a subject and verb, and it conveys a complete idea. Let's take a quick review. What is clause? It is a group of words that includes a subject and verb, and it provides us a complete idea. Now look at the example. She played a dog, in which we have subject, we have verb, and it conveys a complete idea. So it's called a clause. Open your book at page number 4. We have kinds of clauses or types of clauses. I am going to read the definitions. A sentence can be made up of phrases and clauses. It's mean when we make a sentence, these sentences made up of phrases and clauses. If a clause makes complete sense in itself, it is called the main clause or the principal clause of that sentence. If it is dependent on another clause to complete its meaning, it is called a subordinate clause. Its mean in main clause or principal clause, its function on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. You know, students, the main clause or principal clause is also called the independent clause. So in independent clause, its function on its own
to make a meaningful sentence. It does not depend on any other clause. It makes a meaningful sentence by itself. So that's called the independent clause, main clause, or the principal clause of that sentence. Dependent clause is that clause which cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished. Dependent clause help the independent clause to complete the sentence. A dependent clause cannot stand alone to form a complete sentence. So that's why this subordinate clause is also called the dependent clause. Now look at the example. Look at the example of clauses in which we have main clause or subordinate clause. When she received the prize, everyone congratulated her. In this sentence, we have two parts. Everyone congratulated her is the main clause, and the subordinate clause is when she received the prize. Here, everyone congratulated her makes complete sense by itself. It's mean in this sentence we have subject and verb, and that phrase give us complete information. So that phrase is called main clause. Now come to the second part. The clause when she received the prize does not make complete sense by itself. It is dependent on the main clause to complete its meaning, and hence it is a subordinate clause. The other part of the sentence is when she received the prize, and this clause does not make complete sense by alone. Come to exercise C. Read the sentences below. Decide whether the italicized groups of words are phrases or clauses. Write P or C against them. You have sentences. First, you read the sentences, and in which we have italic group of words that are maybe phrase or clause. You just identify either it is phrase or clause and then write against them P or C. You will do this exercise in your textbook. So now put a pencil in your hand. Sentence 1. Haris lives in a house with marble flooring. So in this sentence we have italic group of word with marble flooring, and you can see in this phrase we have not a finite verb. So this is a phrase. He lives in a palatial house that was built recently. Now students, identify the sentence, either it is a phrase or clause. In this sentence we have a subordinate conjunction. Yes, we have. That is a subordinate conjunction. So this part of sentence is a clause. So write C. Come to sentence 3. Ali ran with great speed. Students, do we have a subordinate conjunction in this part? No.
So, what is this? It is a phrase or a clause? Yes, it is a phrase. So, write P against them. Move to sentence 4. Since he was so fast, no one could overtake him. In this sentence, do we have a subordinate conjunction? Yes, we have. And that is since. Since is a subordinate conjunction. So, this sentence is a clause. Write C against the sentence. Move to sentence 5. Sarah tried to finish the work fast. Yes, students. Is it a phrase or a clause? You can see the italic word starts with to. And what we learn in phrase? If a phrase begins with to, so it is an infinitive phrase. So it is a phrase. Write P. Come to the last sentence of this exercise. That she should be the first to finish is one of her 5 resolves. So, in this sentence, we have italic word that she should be the first to finish. And this part of sentence begins with subordinating conjunction. So, it is a clause. Write C against them. Yes, students, now we done the exercise A. Page number 5, exercise D. Convert the phrases in the following sentences into clauses using the words given in the brackets. The first one has been done as an example. Students, you will do this exercise in your exercise notebook. What you do in this exercise, you have to convert the phrases into clauses by the helping of the words that are given in the brackets. One has been done for you. I am going to read and explain it. Asad hopes to pass the interview easily. Answer: Asad hopes. As you know, students, to pass the interview easily. This is the phrase to pass. So it's an infinitive phrase. What we do, we change into clause. How? Look at here. Asad hopes. Is it clear? Then that is a subordinating conjunction. Remember? Now use that instead of to. So as we know that when we use the subordinating conjunction, then the other part of sentence also includes subject and helping verb or main verb. So what we do, after that we write he. That refers to Asad. Then can pass the interview easily. So what's the answer? Asad hopes that he can pass the interview easily. At page number 5, we have exercise E. You will do this exercise in your notebook. Convert the clauses
in the following sentences into phrases using the words given in the brackets. The first one has been done as an example. What you do, you have to convert clauses into phrases by the helping of the words which are given in the brackets. One has been done. Look at the sentence number 1. He found a place where he could keep it in. This is the clause sentence. What we do, we change into phrase by the helping word of to. So, he found a place. This is the sentence. Now, the other part of the sentence is where he could keep it in is a clause because it starts with a subordinating conjunction. So, we use to. It's an infinitive phrase. So we add to keep it in. We omit subordinating conjunction, subject and helping verb to change into phrase. Now the sentence become he found a place to keep it in. What you do, you will do 5 sentences from this exercise in your exercise notebook. Now students, come to functions of clauses, in which we have 3 functions of clauses: noun clause, adjective clause, adverb clause. Functions of clauses. A subordinate clause can perform the function of a noun, an adjective or an adverb. Move to number 1, that is noun clause. A subordinate clause that does the work of a noun is called a noun clause. It's mean a noun clause is a dependent clause that acts a noun. It does all the things that a noun does. Let's take an example. He says that it will not work. So, from that it will not work, a noun clause begins. So, it's called a noun clause, and this clause gives information about subject, that is he. He says that it will not work. That it will not work is a noun clause, and this clause gives information about subject, that is he. Student, our second function of clause is adjective clause. At page number 6, a subordinate clause that does the work of an adjective is called an adjective clause. You know students, adjective clause is also called relative clause, and
and it describes a noun. Adjective clause is that clause. It describes a noun. It is not a complete thought. It also begins with a relative pronoun like that, which, when, who, etc. It also answers the questions about nouns like who won, which one, how many, who was. Let's take an example of adjective clause. I remember the letter that she wrote to me. This is the example of an adjective clause in which I remember the letter is the main clause. And you know, students, main clause is also known as independent clause. The other clause of the sentence is that she wrote to me is a subordinate clause, which is also called dependent clause. As I told you in definition that adjective clause describes a noun. In this example, the subordinate clause describes the noun, that is letter. As I told you that adjective clause is that clause which answer the questions about nouns. In this sentence we have I remember the letter that she wrote to me. Which letter? So it's a question which letter, and letter is a noun. So the answer is that she wrote to me. Now, third clause is adverb clause. A subordinate clause that does the work of an adverb is called an adverb clause. Adverb clause एक dependent clause होता है that does not stand on its own, plus it modifies the verb. So that's called the adverb clause. It starts with the following subordinating conjunction like because, unless, since, whenever. These are the subordinating conjunctions. And adverb clause start with the subordinating conjunction. Adverb clause of time. An adverb clause that shows the time when the action takes place is an adverb clause of time. It's mean this type of adverb clause gives information about when the action happens. Now look at the example.
We reached the school before the bell rang. So in this sentence, before the bell rang is the subordinate clause. Why? Because it starts with the subordinate conjunction. So it is a dependent clause, and the main clause of this sentence is we reached the school. So in this sentence we gives information for before. बिफोर से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि जो बिफोर वर्ड है ये हमें बता रहा है टाइम के बारे में, कि वो स्कूल कब पहुंचा था, बेल बजने से पहले. सो इट्स मीन कि जहां पर आपके पास टाइम की बात हो रही होगी क्लॉज में, वो आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा. अब इन्होंने यहाँ पर कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस दिए हुए जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के हैं. When, while, as, whenever, after. Look at the different types of adverb clause. Number one is adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of reason, adverb clause of comparison, and adverb clause of manner. Look at the example of adverb clause. He could not come because he was sick. So in this sentence, because he was sick is a subordinate clause. क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होगा जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. इट्स मीन कि वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और ये स्टार्ट हो रहा है किससे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, दैट इज बिकॉज. ही कुड नॉट कम is a independent or main clause of this sentence. अच्छा, यहाँ पर एक और हमारे पास सेंटेंस है. Since the subordinate clause modifies the verb come, it is an adverb clause. It's mean कि subordinate clause जो है वो modify कर रहा है verb को, come को, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं adverb clause. प्लस स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज में हमारे पास क्या होता है कि इट आंसर्स दी क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमें दे रहे होते हैं, लाइक हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा. सो इन दिस सेंटेंस व्हाई ही कुडंट कम, सेंटेंस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई ही कुडंट कम, वो क्यों नहीं आया, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था. सो अब जहां पर हमें क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, वो आंसर जो होगा वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 6. एक्सरसाइज F. अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम इन द गिवन सेंटेंसेस. आपने इस एक्सरसाइज को फर्स्ट ऑफ ऑल बुक में ही करना है. सो पुट अ पेंसिल इन योर हैंड, और इधर आपने अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम को. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दी सेंटेंस 1. सेव सम मनी वाइल यू आर स्टिल वर्किंग. अब यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे पास जहाँ पर आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वही था जहाँ पर पता चल रहा है कि एक्शन कब हुआ था या कब होना होगा. सो नंबर 1 सेंटेंस ये है हमारे पास, सेव सम मनी व्हाइल यू आर स्टिल वर्किंग. अब यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होंगे वो व्हेन, व्हाइल, एज, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर और सिंस से स्टार्ट हो रहे होंगे. सो इस सेंटेंस में हमारे पास है व्हाइल. सो इट्स मीन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो स्टार्ट हो रहा है व्हाइल यू आर स्टिल वर्किंग से हो रहा है. दिस इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि तुम्हें पैसे बचाने चाहिए while you are still working, जबकि तुम अभी काम कर रहे हो. क्लियर है? Now look at the second sentence. As they prepared to leave, everyone requested them to stay on. So इस सेंटेंस में हमने ये अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक
as से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. सो इट्स मीन दिस इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एज दे प्रिपेयर टू लीव. ठीक है, वो तैयारी कर चुके हैं छोड़ने की. एवरीवन रिक्वेस्टेड देम टू स्टे ऑन. कम टू सेंटेंस 3. डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम एट वर्क. सो स्टूडेंट्स, इधर आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहाँ दिख रहा है? कौन सा वर्ड है? यस, व्हाइल आई एम एट work, because it is the subordinating conjunction while and the rest of the sentence is the adverb clause of time. That you will do these sentences by yourself. Students, come at page number 7 in which we have exercise G. Fill in the blanks with the adverb clauses of time using the words given in the box and the conjunctions when, whenever and after. एक्सरसाइज जी जो है ये आपने अपनी कॉपी में करनी है, एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है, बट बिफोर दिस आप इसे बुक में करेंगे मेरे साथ ही. इसमें आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इन ब्लैंक्स में फिल करना है, लेकिन बॉक्सेस में आपके पास आंसर्स गिवन है, उसके साथ आपने ऐड करना है कंजंक्शन को, when, whenever और after. So students, let's start the exercise. Number 1 sentence is dash I could play inter-school matches. So अब यहाँ पर inter-school matches हमारे पास है, so definitely the answer is I joined the team. अब ये हमारे पास जो आंसर है वो I joined the team है. इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? एनी गेस स्टूडेंट? वैन, वैन एवर एंड आफ्टर में से? यस, वी ऐड व्हेन. व्हेन आई ज्वाइंड द टीम आई कुड प्ले इंटर स्कूल मैचेस. सो राइट हियर व्हेन. कम टू सेंटेंस 2. He comes to see me dash. So which is the correct answer? He comes to see me. He comes to the city. Am I right? Yes. So the correct option from the box is he comes to the city. But which conjunction we add in this part of the sentence is? Yes, whenever. So the correct answer is whenever he comes to the city. He comes to see me whenever he comes to the city. Now students, come at sentence 3. Dash the chief guest walked in. So the correct answer is we entered the hall. And what is the right conjunction? When we entered the hall, the chief guest walked in. So right here when. सॉरी, इधर लिखिएगा आप, यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं वहाँ लिखना चाह रही थी. खैर, हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं. when we entered the hall, the chief guest walked in. To sentence 4. They could not enter the hall. Then what is the correct answer? Yes, the gate was closed and the correct conjunction is after. So write with me, after the gate was closed. They could not enter the hall after the gate was closed. Come, last sentence of this exercise. Dash, please give him this message. Yes,
What is the correct answer? This is the remaining option we have in our box. He comes. So the subordinate conjunction is when. When he comes is the right answer. Please give him this message. Now exercise G is completed. जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अभी आपकी बुक में करेंगे along with me, and I hope आप लोग ये कर चुके होंगे अपनी बुक में. अब आपने इसको अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में कॉपी करना है. The next different type of adverb clause is adverb clause of place. An adverb clause that shows the place where an action takes place is an adverb clause of place. So adverb clause of place वो clause होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कहाँ action हुआ था या हुआ है. So उसको हम कहते हैं adverb clause of place. Easy है ये भी. adverb clause of time में हमने देखा था कि कब हुआ था action. adverb clause of place में हम देखेंगे कि कहाँ हुआ था action. Example है हमारे पास I want to keep it wherever there is space. So wherever this is space एक subordinate clause है, एक subordinate adverb clause है, यानी कि ये एक dependent clause है. और I want to keep it है हमारे पास main clause और independent clause. So इस clause में हमें पता चल रहा है adverb clause जो होता है वो हमें बताता है कि कहाँ मैंने रखना है. Where there is a space, जहाँ जगह है वहाँ रखना है. So adverb clause of place are introduced by the subordinating conjunctions where and whenever. जहाँ पर आपको where और whenever से कोई clause होता start नजर आ रहा है इन subordinating conjunction से, so it's mean वहाँ बात हो रही है adverb clause of place. Students, come third type of adverb clause. At page number 8 we have adverb clause of reason. An adverb clause that shows the reason why the action takes place is an adverb clause of reason. It's mean कि adverb clause of reason नाम से ही आपको पता चल रहा है वो clause है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि action क्यों लिया गया है, उसका reason क्या है, वजह क्या है. So इस टाइप के clause को हम कहते हैं adverb clause of reason. Example है हमारे पास we reached the place late because the car broke down. इस सेंटेंस में हमारे पास दो पार्ट्स हैं. एक आपके पास है we reached the place late जो कि है मेन क्लॉज. सेकंड है आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज जिसमें आपको रीजन पता चल रहा है कि वो क्यों लेट आए थे, बिकॉज द कार ब्रोक डाउन. सो जहां आपको रीजन मिल रहा होगा वो उस सेंटेंस का एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहलाएगा. प्लस यहाँ पर एक और सेंटेंस में हमारे पास लिखा हुआ है सिंस द सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज टेल्स अस द रीजन व्हाई वी रीच द प्लेस लेट इट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. इट्स मीन यहाँ पर वही क्वेश्चन किया जा रहा है. सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो हमें बताता है कि वो रीजन दे रहा है कि वो क्यों लेट आए थे. सो जो बिकॉज से जो पार्ट आपका शुरू हो रहा है द कार ब्रोक डाउन, दैट्स कॉल्ड द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. प्लस स्टूडेंट्स एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रीजन्स जो होंगे वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे कि बिकॉज, सिंस, एज एंड दैट. अगर ये सेंटेंस आपके पास आ रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये यूज हो रहे हैं, सो इट्स मीन दैट्स कॉल्ड द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जे पर अब हम आ जाते हैं एट पेज नंबर 8. अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आपके पास गिवन है. ये एक्सरसाइज आपने स्टूडेंट्स बुक में ही करनी है जहां आपने अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को सेंटेंस में. जहां आपको रीजन नजर आएगा उसे आपने अंडरलाइन कर लेना है. नाउ आपको फर्स्ट सेंटेंस में करके दिखा रही हूं. सिंस यू आर टायर्ड यू शुड हैव अ रेस्ट.
सो यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे पास जहाँ एक उन्होंने रीज़न दिया है और एक सेंटेंस में वो रीज़न जो दिया जा रहा है उसका सेकंड पार्ट जो है वो उसका मेन क्लॉज है और जहाँ रीज़न दिया जा रहा है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। सिंस यू आर टायर्ड यू शुड हैव अ रेस्ट, यानी कि रेस्ट तुम्हें क्यों करना चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम टायर्ड हो, तुम थके हुए हो। सो इस क्लॉज में, इस सेंटेंस में हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है सिंस यू आर टायर्ड, सो अंडरलाइन इट। नाउ कम टू सेंटेंस 2, आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम बैक। अभी मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के बिकॉज, सिंस, एज और दैट से स्टार्ट हो रहेंगे। तो यहाँ हमारे पास इस सेंटेंस में अगर हम देखें, सो वी हैव दैट इन आवर सेंटेंस, सो इट्स मीन दैट यू हैव कम बैक इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ, यानी कि मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, दैट यू हैव कम बैक, क्योंकि तुम वापस आ गए हो। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू डू, you will do the rest of the sentences in your textbook by the help of my lecture. Students, next type of adverb clause is adverb clause of comparison. Adverb clauses of comparison are introduced by the subordinating conjunction than or by the relative adverb as. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास एक वर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को, दो पर्सन्स को, दो थिंग्स को। तो जहाँ आप कंपेयर कर रहे होते हैं किसी दो चीज़ों को या दो शख्स को, तो वहाँ पर हमारा जो सेंटेंस होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रहा होगा, जिसमें आप या तो दैन यूज़ करते हो या फिर एज यूज़ करते हो। लुक एट द एग्जाम्पल, ही इज़ ओल्डर दैन ही प्रिटेंड्स। सो यहाँ पर आपके पास जो मेन क्लॉज है दैट इज ही इज़ ओल्डर, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड द सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज इज दैन ही प्रिटेंड्स। सो यहाँ पर जो कि सेंटेंस आपके पास दैन से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ दिस सेंटेंस। क्योंकि जो देन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कंपैरिजन को, कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये आपका कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, कम एट पेज नंबर 9, एक्सरसाइज के, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। You will do this exercise in your book, put a pencil in your hand. I am going to explain you sentence number 1. The girl is cleverer than you think. यहाँ अपने adverb clause of comparison को underline करना है जो कि than से start हो रहा है, so it is very easy that than you think is a adverb clause of comparison. Underline कर लीजिए students. Now what you do, you will do the remaining sentences by yourself in your textbook. It is very easy. You can do it easily with the help of my lecture. Come to the last type of adverb clause, that is adverb clause of manner. An adverb clause of manner shows the manner in which an action is performed. इट्स मीन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर वो क्लॉज है हमारे पास जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हाउ द एक्शन इज डन, किस तरह एक्शन हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। शी स्पीक्स एज इफ शी ओन्स एवरीवन। एज इफ हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, शी इज़ अ सब्जेक्ट, ओन्स जो है हमारे पास एक वर्ब है। यहाँ पर हमने ये बताना है कि एक्शन हुआ है, लेकिन किस तरह हुआ है वो हमने बताना है। सो एडवर्ब क्लॉज है हमारे पास एज इफ़ शी ओन्स एवरीवन, जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। और वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? स्पीक, कि उसने कहा है, किस तरह कहा है, किस तरीके से कहा है, वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इट्स मीन कि दिस टेलिंग अस इन व्हाट मैनर डज शी स्पीक, उसने किस तरीके से बात कही है, as she owns everyone.
So this is the adverb clause of manner. Students, in your book at page number 9 adverb clause of manner जो हैं वो कौन सी कंजंक्शन से यूज़ होंगे वो लिखा हुआ है, like as so, as if, as though, in the way that, and how. ये सारे वो कंजंक्शंस हैं जो कि आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के सेंटेंसेस में नज़र आएंगे. Students, come to exercise L. Underline the adverb clauses of manner in the following sentences. आपने यह एक्सरसाइज भी अपनी बुक में ही करनी है. यू जस्ट अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट अपियर्स एज इफ इट माइट रेन. अभी आपको बताया था कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो है वो कंजंक्शन जो उसमें यूज हो रहे होंगे वो एज इफ हो सकता है, as so, as though, in the way that या फिर how. So इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है as if. It is the conjunction? Yes, it is the conjunction. So adverb clause of manner आपका स्टार्ट हो रहा है as if it might rain is the adverb clause of manner of this sentence. Now come to the next one. You may speak as I told you. यहाँ पर भी हमारे पास as है और यहाँ मैनर बताया जा रहा है कि आपको किस तरह बात करनी है, जिस तरह मैंने आपको कहा है. तो इट्स मीन as I told you is the adverb clause of manner. Students, you will do remaining sentences by yourself. In your textbook, you just underline the adverb clause of reason, comparison and manner in your textbook. So now chapter is completed. Students, come at page number 4. मैं आपको definitions mark करवा रही हूँ जो कि आपने अपनी कॉपी में लिखनी है एक्सरसाइज नोटबुक में. So clause की definition हम लेंगे, a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is called a clause. A clause has a finite verb. यहाँ तक definition हो जाएगी clause की. Example है हमारे पास, I could see the waves which were lashing against the coast. So this is the definition of clause. Now come to the types of clauses, and which we have principal clause और subordinate clause. Definition mark कर लीजिए students. Principal clause की definition है, a sentence can be made, यहाँ से आपने mark करना है, if a clause makes complete sense in itself, it is called the main clause or the principal clause of that sentence. Example हम लिखेंगे, when she received the prize everyone congratulated her. जहाँ पर everyone congratulated her हमारे पास है main clause और when she received the prize is the subordinate clause. Example आप पूरी यहाँ से ले लेंगे. नेक्स्ट है आपके पास subordinate clause. If it is dependent on an other clause to complete its meaning, it is called a subordinate clause.